finally we reached Central Park Mall. So this is the center point. So from here we can go on all the sides. Like if we go straight, we will go for the outside area where there are many activities are going all the time. And on the ground floor there are usually makeup shops. On the first floor usually like garments and shoes like that. And then on the first floor and second floor, first floor is purely for electronics and second floor is for kids. So let's go to the first floor. I have to buy some shirts. Let's see what is the variety here. Shirts. Let's see what is the variety here. I think the red one looks better. Okay. So I buy one dress. It cost me, I buy the red one. So it cost me like $23. Not so much expensive. Looks good. Desain eksterior yang sporty, boleh dilihat ya kan, dan juga dinamis pada Neo Soho hybrid memberikan kesan gagah yang siap membuat perjalanan Anda lebih menarik juga. Itu dia, Thomas. Kita lanjut lagi ke Pullman Jakarta. Kalau ini, saya oh my watch, dari Alves. Ini tercermin dalam desain, fitur, dan juga teknologi pada unit Alves yang dirancang untuk memaksimalkan setiap momen berkendara dengan tampilan eksterior yang stylish, desain interior yang modern, serta inovasi teknologi fully interconnected smart ecosystem. Unit Alves hadir untuk memberikan sebuah paket dinamis bagi Anda yang mencari pengalaman berkendara yang menakjubkan. Alves, rasakan sensasi dari perpaduan antara gaya. Terima kasih sekali lagi, tentunya keseruan dan kebersamaan kita tidak akan berakhir di sini, tidak akan berhenti sampai di sini aja. Kita bakal nemenin kamu semua sampai malam nanti dan bakal ketemu di Car is good, quite comfortable and 4-seater. So it can be folded, and if required, it can be used. So this is an electric car. Sampai besok. It's quite good. Iya dong, Wina bakal balik lagi besok. Jangan kemana-mana, besok datang lagi ke sini. Sampaikan tentunya
kebersamaan dan kebahagiaan yang dihadirkan oleh unit penonton Indonesia untuk berkunjung serta pada hari ini. Karena saya minta nomor pemilik sendiri. Halo Pak. What is the price? What is the price? The price is start from 214 million rupiah. 214 million. Yeah, 214 million rupiah. The lowest type, And including all taxes? including all the taxes, is on the route for Jakarta domisili. Only Jakarta. Oh, in Jakarta. Thank you. Okay, thank you. तो अभी हम जैसे यहाँ पर बाहर आए तो यहाँ पे इनका बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है कि जो डॉग्स है पेट डॉग्स तो उसका यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है। मैंने देखा बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे इनके पेट्स हैं। Tara? और देखते हैं और क्या कुछ है। अगर हम उस साइड पे जाएं तो जो इनकी डेली की फीड होती है वो है और इस तरह के जो इनको पहनाने की कुछ चीज़ें होती हैं वो है। अभी हम उस साइड पे जाते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ये पेट्स देखे। यूजली हम इनसे वीडियोस में ही देखते हैं तो आज फर्स्ट टाइम चांस मिला ये हर किस्म के पेट्स देखने का। एक छोटा सा जा रहा है। अभी ये कुछ फ्रीज आइटम है और वो डॉग को चेक कराया जा रहा है। उसको पसंद होगा तो फिर ये और ख़रीदेंगे। ये तो बहुत ही बड़ा है और एक बार ही तो मैं डर गया। ओ 5-6 हैं। Saudaraku hilang om. बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी करीब से आप नेचर को देख सकते हैं और देखें बच्चे भी टच कर सकते हैं। कोई किसी को मना नहीं कर रहा।
और ऊपर एक रेस्टोरेंट है अगर आप यहाँ पे खाना चाहें। ये बाकी सबसे ये हट के ये सेपरेट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है और हर ब्रांड आपको मिलेगा, KFC, मैकडॉनल्ड्स, अदर आल्सो। This shopping mall is very famous because of this bridge. This bridge connects two shopping malls. One is this, and the second one is right in front of us. And here, there are all the restaurants, all the famous brands. These are the restaurants. And if you want to buy some fabric or shoes or makeup, you have to come in this section. And that section is purely for food and restaurants. So now we are on the very famous bridge of Central Jakarta. So when we will reach in the middle, they have made a very beautiful open area. So usually people sit there for like 1 hour, 2 hours, have some drinks, and then they go back to home. So from that skywalk, we can have a very good view of the city.